Hello and welcome. Welcome to the daily Nifty and Back Nifty Insights with MJ. Friends, आज है 14 January and we'll be estimating the probable moves, resistance, support levels, buying and selling zones for Nifty and Back Nifty for the next trading day, which will be on 15th January, right? And of course, we'll be also taking the trading plan on a smaller time frame of 15 minutes. Friends, if you are new to our YouTube channel and haven't if subscribed the channel, my invitation is to you to subscribe to it and also press the bell icon such that whenever we upload any new video, you get notification. And also be generous to share the videos with your friends and trading communities so that they also have access to the quality knowledge. All right, so let's go to the daily chart of Nifty and Bank Nifty, friends. As estimated today, you can see that today was a narrow range for Nifty as well as Bank Nifty. That's what I had, said in my yesterday's video about today's trading range, right? And the Nifty as well as Bank Nifty opened slightly gap down and remain range bound, while as Nifty covered up and most of the lost ground was completely covered up. Bank Nifty, though recovered slightly and went up, but then again it went below yesterday's closing and closed with a doji in red, right? And the top contributors today were, UPL, BPCL, IndusInd Bank, TCS, IOC, while as the top losers were SCL Tech, Grasim, GSW Steel, Axis Bank, and Tech Mahindra. Right. Overall, Nifty 50 की band जो broad range थी वो neutral रही. 26 stocks advanced while 24 declined from the stack of Nifty 50. Nifty closed, although Nifty opened with a loss of 15 points, but it closed with a gain of 31 points at 14,595.6, while as the Bank Nifty had an opening loss of 48 points and it closed with a loss of 55 points at 32,520. अगर मैं ब्रॉडर मार्केट की बात करूं तो निफ्टी लार्ज कैप ने आज ऑलमोस्ट 0.45% गेन किया, while as mid cap was flat, small cap was got 0.64% upside today, right? हमने आज के लिए जो निफ्टी की रेंज एस्टिमेट की थी कल, फ्रेंड्स, वो थी 14,400 से 14,700 की. निफ्टी ट्रेडेड वेल विद इन द रेंज, while as Bank Nifty also traded in the estimated range of 32,000 to 30,000, 33,000. 500 की रेंज हमने आज के लिए देखी थी, and that's what happened. And we do estimations based upon the data points as well as based upon the technical price action perspective, right? अगर हम ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से देखें तो आज निफ्टी ने इन कैंडल कंसोलिडेशन बनाया, मीनिंग lower high and higher low, while as Bank Nifty has made higher high and higher low. That means the Bank Nifty में uptrend continue रहता है, right? And Nifty ने एक hanging man kind of pattern बनाया जो कि टॉप पे एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल है, कंफर्मेशन की जरूरत पड़ती है. While as Bank Nifty at a higher level seems to be tired. Yesterday also it made a long leg doji, and today also again it made a doji, which is again talking about indecisive range. Like 32,612 was the highest point previously Bank Nifty had made in the January of 2020, and उसके एक साल के बाद में ऑलमोस्ट वहीं पे बैंक निफ्टी स्ट्रगल कर रही है. सो लेट्स सी नाउ बैंक निफ्टी से ही निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा ताकि निफ्टी और ऊपर जाए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर स्टिल बिलो 20-25% ऑफ देयर प्री कोविड टाइम्स, राइट? Now, if you look at data perspective, friends, let's look at option chain analysis of Nifty. And चूंकि आज एक्सपायरी थी, थोड़ा म्यूट एक्सपायरी रही निफ्टी की एज वेल एज बैंक निफ्टी की रेंज में रही. हम बात करेंगे अभी 21 जनवरी एक्सपायरी के वीकली ऑप्शन चेन की. सिंस निफ्टी हैज क्लोज्ड एट 14,595 टू 14,600 को हम एट द मनी कंसीडर करेंगे, फ्रेंड्स. एंड उसके सराउंड में हम देखेंगे कि किस टाइप के बुलिश और बेरिश पुट राइटिंग या कॉल राइटिंग हुई है, राइट? सो 14,600 के आसपास में अगर हम देखते हैं, फ्रेंड्स, तो we see that slightly above than 5 points above there is a good
put writing has happened, almost 5.8 lakh contracts, and overall acha 1.1 million contract hai. But um, we would consider 14,500 as a support level because that's in the money. So agar, of course, 14,600 ke upar agar Nifty gayi, so definitely 14,600 will also emerge as a strong support. But at this point of time, our S1 remains here, and हमारा जो support 2 emerge होके आ रहा है friends, वो हुआ है 14,400 पे, right? क्योंकि ये नई ऑप्शन चेन सीरीज है, इसमें डेफिनेटली बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग आपको दिखाई नहीं देगी, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द मार्केट इज ऑलरेडी टायर्ड, थोड़ा ऑप्शन सेलर भी केयरफुल रहेंगे यहाँ पे, राइट? नाउ अगर हम कॉल साइड में देखते हैं फ्रेंड्स, तो जहाँ पे कि हमको 14,400 लोअर लेवल पे दिखाई दे रहा है पुट साइड में, वैसे ही कॉल साइड में अगर आप देखेंगे हमारा जो एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो आ रहा है 14,600 पे, जहाँ पे 1.7 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। उसके ऊपर 14,700 का हमारा दूसरा रेंज नजर आ रहा है, जहाँ पे 1.2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट हैं, और कल फ्राइडे भी है, राइट? तो वीकेंड भी है, सो वीकेंड के टाइम पे यू नीड टू बी केयरफुल, समटाइम्स द मार्केट में witness sell off, right? तो प्रॉफिट बुकिंग लॉन्ग वीकेंड या वीकेंड में अक्सर आपको देखने को मिलती है, सो यू नीड टू बी केयरफुल। सो 14,700 का अगर लेवल टूटता है, देन 14,800 का लेवल हमको डाउन साइड में दिखाई दे रहा है। सो अगर हम बात करें तो स्कैटर्ड कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग हुई है आज, डेफिनेटली बोथ पार्टिसिपेंट्स वर नॉट विलिंग टू टेक दैट extra risk, I suppose, after today's mute expiry, right? So I would consider 14,400 to 14,700 की range for tomorrow, for this option chain series of Nifty. अगर मैं PCR की बात करूं फ्रेंड्स, इस ऑप्शन की PCR है 1.06, जो कि कल हमारी थी 1.07, राइट? सो मोर और लेस बायस वही है अगेन। कल के लिए भी रेंज बाउंड दिखाई दे रही है निफ्टी, एंड ये मोर और लेस सेम ही रेंज दिखाई दे रही है, थोड़ा एक पॉइंट थोड़ा ऊपर चली गई है, राइट? जहां हमने प्राइस एक्शन में एक रेंज देखी थी फ्रेंड्स निफ्टी की, जो हमको दिखाई दे रही थी डाउन साइड में 14,436 की, अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें 14,565 हमारा पहला सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट हमको दिखता है 14,538 पे, थर्ड दिखता है 14,474 पे, एंड फोर्थ हमको दिखता है 14,436 पे। सो एंड रेजिस्टेंस जहां हमको दिखाई दे रहे 14,617 पे, 14,652 एंड 14,007 एंड 14,737 पे हमको दिखाई दे रहे। तो अगर हम इसमें रेंज की बात करें, मोर और लेस हमारा जो ऑप्शन चेन से रेंज निकल के आ रहा है, यहाँ पे भी वही रेंज हमको दिखाई दे रही है। हाउएवर थोड़ा यहाँ पे रेंज थोड़ा हायर लेवल पे 14,436 आई विल से, तो आई जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू, 436 to 14,737, right? So that's the range for consider it as a 7, थोड़ा गार्बल है राइट करने में, राइट? सो अब सिमिलरली बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में हमको जो लोअर साइड में सपोर्ट दिखाई दे रहे, वो दिखाई दे रहे 32,445 पे, 32,339, 32,155 पे, एंड 32,000 पे, जो कि कल की ही रेंज है, राइट? मोर और लेस अपर साइड में अगर देखेंगे रेजिस्टेंस तो 32,575, 32,715, 32,810 एंड 33,000 पे। Again, on the higher side, the resistances are more or less the yesterday's levels. So that's on the support and resistance front, and we check that on option side also. Trading range हमको 14,400 से 700 की जो दिखाई दे रही थी, let's say 35 पॉइंट्स के आसपास उसको अगर ऊपर शिफ्ट करते हैं तो 14,450 से लेके 14,700 या 14,750 की रेंज हो सकती है, जो कि डेटा एंड प्राइस एक्शन को सिंक कर सकती है, राइट? अगर हम दूसरे डेटा की बात करें, आज का प्रोविजनल डेटा FIIs का है 1,077 करोड़ की नेट बाइंग इन कैश मार्केट इन इक्विटीज, while the DIIs were a net seller but with a very small amount, right? 188 करोड़ की सेलिंग की DIIs ने. So overall comparatively but FIIs were stronger. अगर हम ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, अभी भी FIIs and pros are sideways. Our friends retailers are mildly bullish as usual in
अगर हम फ्यूचर के बात करें इंडेक्स के फ्यूचर की, तो FIIs आर एक्सट्रीमली बुलिश while as pros retailers and DIIs are at this point of time net short in future of index. अभी भी मार्केट सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप्स ही है। आप देखेंगे जैसे ही लोअर लेवल पे निफ्टी और बैंक निफ्टी जाती है, वहां पे बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट हो जाते हैं। सो दैट्स द ट्रेडिंग प्लान फॉर टाइम बीइंग till this range of 650 is broken decisively on the upper side for Nifty. आज RSI 81, कल के जैसे 81 रहा निफ्टी का। इंडिया विक्स मोर और लेस 1% गिरा है, बट नॉट कुछ खास। 23 पे इंडिया विक्स है। मार्केट्स ऑन डेली इंडिकेटर्स आर ऑन ओवरबॉट जोन, सब 90 के ऊपर चल रहे हैं, वीकली में भी, डेली में भी और मंथली में भी। सो मार्केट ओवरबॉट जोन में, ऐसे में एक करेक्शन का और कंसोलिडेशन का तो खतरा नहीं बोल सकता, बट करेक्शन का खतरा हमेशा बना रहता है। सो यू नीड टू बी केयरफुल. And Nifty has crossed the PE ratio of 40 today, right? So you also need to understand that. Also, there are valid reasons for that, as the earnings are very less at this point of time. I would say that as long as 14,000 के ऊपर Nifty है, you would see 14,800, 15,000 would be the target. Similarly for Bank Nifty, as long as 31,800 के ऊपर है, 33,000 to 33,500 हमारा Bank Nifty का target है. Let's look at Nifty now on a smaller time frame. Nifty as well as Bank Nifty, so that हम उसके लिए intraday trading opportunities ढूंढ पाए दोनों में. Right, so let's look at a 15-minute chart for that, friends. 15-minute chart में अगर देखें तो 14,565 से लेके 14,617 का जो ये एक ट्रेडिंग जोन होएगा फ्रेंड्स निफ्टी में, उसको अवॉइड करें ट्रेड करने के लिए, राइट? So that would be your range bound and volatile zone. So of course ORC breakout मिले आपको यहाँ पर, तो definitely हमारी trading strategy के साथ आप उसको trade कर सकते हैं। 14,617 के ऊपर अगर ORC breakout होके जाता है, तो then definitely you can take a long trade for 14,652. ज्यादा नहीं, अराउंड आपको 30-35 पॉइंट्स मिल सकते हैं, और 652 टूटता है तो डेफिनेटली देन सीधे 700 का टारगेट है, दैट यू विल गेट अ बोनस ऑफ 50 पॉइंट्स ऑन अपसाइड ऑन दैट. बट अगर मार्केट 14,700 पे या 14,652 पे खुलती है, तो देन डेफिनेटली यू विल गेट अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देयर. अगेन ORC का ब्रेकआउट पेशेंटली देखना ना भूलें, और उसको सस्टेनेबली ब्रेकआउट होने दें, मतलब 15-20 मिनट ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन करना चाहिए प्राइस को अप या डाउन साइड में. सिमिलरली अगर निफ्टी गैप डाउन स्टार्ट होती फ्रेंड्स 14,474 पे, या 14,500 के लेवल पे, या 14,435 के लेवल पे, ये सब लेवल पे, राइट? तो देन यू डेफिनेटली सी द बाइंग इंटरेस्ट डेवलपिंग, एंड ऑन breaking off ORC candle on the upper side, you can go long, right? So that should be your strategy for trading Nifty. Of course, look at your trading strategy, which may be using super trend or moving averages, or even VWAP. You can apply that and then take accordingly. But don't forget to see the volumes. Volume must be rising if you're taking a long position or a short position, either side, right? Now, अगर हम बैंक निफ्टी में देखें फ्रेंड्स, 32,445 से 32,575 की रेंज अगर मार्केट यहाँ खुलेगी, तो स्टार्टिंग में रेंज बाउंड एंड वोलेटाइल रहेगी. सो अवॉइड करें 945 से पहले ये एरिया में ट्रेड न करें. ORC का ब्रेकआउट देखें, एंड ORC के ब्रेकआउट के हिसाब से आप उसको ट्रेड कर सकते हैं. नाउ कंसीडर 32,000 और 32,155 पे अगर बैंक निफ्टी स्टार्ट होती, अगेन लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी. ORC अगर अपर साइड में ब्रेकआउट मिले, तो आप डेफिनेटली उसको स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करें. नाउ व्हाट हैपेंस इफ द बैंक निफ्टी स्टार्ट्स समवेयर अराउंड 32,800 और 32,700? अगेन आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी. अगर ORC आपकी रेड कैंडल रहे और डाउन साइड में ब्रेकआउट मिले, एंड योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सपोर्टिंग दैट ऑन सस्टेनेबल बेसिस, आप शॉर्ट कर सकते हैं वहां पे. हाउएवर, in shorting or going long, you should not forget to use the stop loss, and if you are in profit, you should not forget to keep on trailing that, right? Keep on booking the profits in at least part lots of Nifty and Bank Nifty, friends. When you are in profit,
by booking the profit, nobody has ever become poorer, right? So ये philosophy हमेशा याद रखें. I'm sure with this you are getting a clear picture of market and you are able to trade confidently and profitability, right? Don't forget to look at India VIX chart or USD INR chart, and of course, आज US markets are in bullish mode while as European markets are in sideways mode. So अगर यूएस मार्केट आज पॉजिटिव में क्लोज होते हैं, जो कि हमने देखा था शाम के टाइम पे कि आज पॉजिटिव में थे, तो डेफिनेटली उसकी एक हवा हमको हमारे मार्केट को भी बुलिश तो बनाएगी बनाएगी. बट फ्रेश डेटा देखना ना भूलें, क्योंकि मार्केट का जो इमोशन है वो फ्रेश डेटा से बनता है और वो आपको ऑप्शन चेन के डेटा में दिखाई देगा या ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर में दिखाई देगा स्टॉक के. सो डोंट फॉरगेट टू follow that part of it, right? And thank you very much for watching our videos and commenting on that. And I'm also pretty glad that most of you are able to make profits, and you're appreciating that. Keep on commenting on the videos, that what kind of videos you would like us to make. We would definitely incorporate those things such that our community gets enriched in its लर्निंग, राइट? तो लर्निंग करते रहेंगे तो अर्निंग तो अपने आप फ्रेंड्स होते रहेगी. सो कल के लिए हमारी निफ्टी की रेंज है 14,450 टू 14,750 के आसपास की, और बैंक निफ्टी के लिए अगेन सेम रेंज है 32,000 टू 33,000, राइट? ओवरबॉट जोन में मार्केट है, इसके लिए यू शुड नॉट गेट सरप्राइज्ड बाय द मार्केट इफ इन केस इट स्टार्ट्स करेक्टिंग और कंसोलिडेटिंग. Right. Thank you once again for watching and liking the video. Do share these videos with your friends and trading communities so that they can also be benefited from quality knowledge, friends. Signing off until the next video. Good luck, happy trading, happy investing.